Hello everyone, welcome to the YouTube channel Developing Mathematical Minds. This is the lecture for class 11th. We were doing trigonometry for the last few classes. We were doing the questions of trigonometry, trigonometrical identities, how to prove the questions. Now today also we are doing few questions. So let us start today's first question. The question is, this is the question of NCERT miscellaneous question 1. NCERT miscellaneous question number 1. It's a very good question. The question is 2 cos pi by 13 into cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 equals to 0. This we need to prove. So for what I will do, I will take left hand side, and left hand side is this 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13. What I am doing, I am applying here 2 cos A cos B. I am applying here 2 cos A cos B. So 2 cos A cos B will give me 2 cos A cos B. 2 cos A cos B formula is cos A plus B plus cos A minus B. Cos A plus B plus cos A minus B. So what I will do, I will write cos A plus B is pi by 13 plus 9 pi by 13. That means 10 pi by 13 plus 9 pi by 13 plus cos A minus B. A minus B is pi by 13 minus 9 pi by 13. Then plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13. This is the left hand side. Now this will become, this is 2 cos A cos B is cos A plus B plus cos A minus B. Then this will give me cos pi plus 9 pi is 10 pi by 13. 10 pi by 13 plus cos 9 minus 8 pi minus 9 pi minus 8 pi. But cos minus theta is plus cos theta. So it will be cos 8 pi by 13 plus this will be cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13. This. Now what I will do, this cos 10 pi by 13 can be written as cos pi minus 3 pi by 13. I can write this cos 10 pi by 13 as cos pi minus, I can write this cos 10 pi by 13 as pi minus 3 pi by 13, and this cos 8 pi by 13 as cos pi minus 5 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 as it is. Now cos pi minus theta, if I am talking of cos pi minus theta, so that will be minus of cos theta, quadrant rule, 0 pi by 2 pi, in second quadrant cos is negative. So cos pi minus theta is minus cos theta. So cos pi minus 3 pi by 13 plus this, that will give me minus cos 3 pi by 13. Minus cos 3 pi by 13. Again here cos pi minus 3 is minus cos 3, this will be minus cos 5 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13. That means minus cos 3 pi by 13 se plus wala cancel, minus se plus wala cancel, I will get 0. I will get 0, which is we need to prove, which is the thing we need to prove. So this is the question, today's first question this was. Now let us do the next question for today. And the next question is, the next question for today is, for doing the next question we have to understand a rule, that is the componendo dividendo rule. Componendo dividendo rule. What is this rule? This is the rule of the topic ratio and proportion. Ratio and proportion. This is the rule for ratio and proportion. Now what does this say? This say that if we are having A upon B equals to C upon D, if we are having A upon B equals to C upon D, अगर दो रेशियो इक्वल होते हैं, that means this will imply A plus B upon A minus B equals to C plus D upon C minus D. इसको ऐसे बोलते हैं न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर
upon numerator minus denominator equals to same thing in the right hand side. Numerator plus denominator upon numerator minus denominator. इसका प्रूफ बहुत आसान है. अगर मेरे पास a upon d equal to c upon d है तो दोनों साइड 1 प्लस कर दिया. That means this will be a plus b upon b equals to c plus d upon d. Now इसी को लेके दोनों साइड 1 माइनस कर दिया. This will be a minus b upon b equals to c minus d upon d. इसको 1 एज्यूम कर लिया, इसको 2 एज्यूम कर लिया, 1 को 2 से डिवाइड कर दिया. That will give me a plus b upon b upon a minus b upon b equal to c plus d upon d upon c minus d upon d. d से d कैंसिल, b से d कैंसिल. जो मैं प्रूव कर रहा हूं प्रूव आ गया. So this we will use in a question. Now I am writing that question for which I have explained you componendo dividendo rule. So let us write this in the corner. What is the rule? The rule is that a upon b equals to c upon d अगर है then CD rule, CD rule बोलते हैं शॉर्ट में, componendo dividendo rule will give me a plus b upon a minus b equals to c plus d upon c minus d. This rule will be used in lots of questions in trigonometry as well as in sequence and series. So this rule is very important. Now the question which I am doing is, if 3 tan a tan b, if 3 tan a into tan b equals to 1, prove that 2 cos a plus b is equal to cos a minus b. This we need to prove. We are given this, we need to prove this. Now what I will do, 3 tan a tan b equals to 1. What does this mean? This means that I can write that tan a into tan b, tan a into tan b is equal to 1 by 3. Tan a into tan b is equal to 1 by 3. That means tan a is sin a upon cos a, तो sin a upon cos a, ऐसी tan b is sin b upon cos b. Sin a upon cos a, sin b upon cos b equals to 1 by 3. अब प्रूफ में देखो यहाँ पर 2 आ रहा है, 1/3 से 2 ज्यादातर वो प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा. 1/3 से 2 बनता है 1 + 3 / 1 - 3. 1 + 3 / 1 - 3 का हो गया 4 / -2. दैट इज -2, तो माइनस प्लस का फर्क तो हो जाता है. दैट मीन्स 1/3 से 2 बनेगा CD रूल से. तो आई एम अप्लाइंग हियर CD रूल. आई एम अप्लाइंग द CD रूल हियर. दैट विल गिव मी दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज a, दिस इज b. a/b equal to c upon d. दैट विल गिव मी sin a sin b plus cos a cos b upon sin a sin b minus cos a cos b is equal to 1 + 3 / 1 - 3. अब ये फॉर्मूला होता है हमारे पास किसका, cos a plus b का फॉर्मूला होता है और cos a minus b का फॉर्मूला होता है. cos a plus b होता है cos a cos b minus sin a sin b, एंड ये होता है इसमें बीच में प्लस आ जाता है. अब ये है cos a cos b प्लस sin a sin b. cos a cos b प्लस sin a sin b मतलब cos a माइनस, ऊपर वाला फॉर्मूला तो बन गया cos a minus b का. अब नीचे में से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा. पहले इस वाले को फॉर्मूला लगाने के लिए पहले मुझे माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा. अगर माइनस कॉमन निकालेंगे तो cos a cos b तो प्लस का हो जाएगा और ये sin a sin b माइनस का हो जाएगा. दैट मीन्स माइनस कॉमन निकालने के बाद फॉर्मूला बनेगा. तो माइनस कॉमन निकालने के बाद अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये फॉर्मूला बन गया किसका, cos a plus b का, इज इक्वल टू 1 + 3 is 4 / -2. माइनस से ये माइनस कैंसिल, 2 से ये 2 पे कैंसिल. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन विल गिव मी cos a minus b is equal to twice of cos a plus b. This is what we need to prove. In this question. So this rule, componendo dividendo rule, will be helpful in lots of questions in trigonometry as well as in different chapters also. So this rule is very important. This we will use in different questions, in different topics also. But this topic is ratio and proportion. ये जो rule है ये किसका है, ये ratio and proportion का rule है. Now let us do the next question.
आज का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एंड द क्वेश्चन आई एम डूइंग इज this question. Let us do the questions. Let us do this question. The question is, if cos alpha minus beta plus cos beta minus gamma plus cos gamma minus alpha is equal to minus 3 by 2, then prove that we need to prove that cos alpha plus cos beta plus cos gamma equals to 0, sin alpha plus sin beta plus sin gamma is also 0. This we need to prove. Yes, this is the question. We are given this, we need to prove this. Cos alpha plus cos beta plus cos gamma 0, sin alpha plus sin beta plus sin gamma should be 0. Let us start the question. And what the question is saying? The question is saying that first of all apply the cos A minus B formula. The cos A minus B formula is what? Cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta. Similarly cos beta cos gamma plus sin beta sin gamma plus cos gamma cos alpha plus sin gamma sin alpha is equal to minus 3 by 2. Now what I will do, I am taking this 2 in the left hand side. I am taking this 2 in the left hand side. So that will give me 2. I am writing 2 cos alpha cos beta plus 2 sin alpha sin beta plus 2 cos beta cos gamma plus 2 sin beta sin gamma plus 2 cos gamma cos alpha plus 2 sin gamma sin alpha इक्वल टू माइनस 3. माइनस 3 को यहां ले आए तो हो गया प्लस का 3 इक्वल टू 0. 2 in the left hand side in the multiplication, minus 3 यहाँ के plus का 3 हो गया equal to 0. Now what I am doing, I am writing this 3 as 1 plus 1 plus 1. What I am doing, I am writing this 3 as 1 plus 1 plus 1, which I can do very easily. And I am writing this one as sin square alpha plus cos square alpha, which is 1. And I am writing this one as sin square beta plus cos square beta, and I am writing this one as sin square gamma plus cos square gamma. I have taken this 3 in the left hand side, this will become plus 3, and all the ones I have written as sin square alpha plus cos square alpha, sin square beta plus cos square beta, and sin square gamma plus cos square gamma. Now let us see what these 3 along with this and this, a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. That means sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma plus 2 sin alpha sin beta plus 2 sin beta sin gamma plus 2 sin gamma sin alpha. That means I can write these things as sin alpha plus sin beta plus sin gamma whole to the power 2 plus the rest of the things, cos per alpha plus cos per beta plus cos per gamma, this and this will give me cos alpha plus cos beta plus cos gamma whole square will be given by 0. This. Now this is the whole square of something, this is the whole square of something. That means these two will be positive. होल स्क्वायर, किसी का होल स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता है, हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, या तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा. अब ये भी, अब सिंपल सी बात है, a प्लस बी को अगर मैं 0 कहता हूं और मैं तुमसे कहता हूं कि a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है, तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब a भी 0 है और b भी 0 है, तभी पॉसिबल हो पाएगा. तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा. दो पॉजिटिव नंबर्स का एडिशन 0 तभी पॉसिबल है जब वो दोनों अलग अलग 0 है. तो समझ वाली बात है, इन दोनों का एडिशन 0 कब पॉसिबल है? व्हेन sin अल्फा प्लस sin बीटा plus sin gamma equal to 0 and cos alpha plus cos beta plus cos gamma equal to 0. This thing is clearly implying this, and this we need to prove.
So the manipulation is that we have to take 2 in the left hand side, -3 यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा, और प्लस के 3 को 1 + 1 + 1 करना है, and then writing this. Then the identity of a plus b plus c whole square, a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2c, like that only. So this was the question from R.D. Sharma. Now let us take one more question. We are doing one more question, and the question is, we need to prove that sine square a equal to cos square a minus b plus cos square b minus 2 cos a minus b into cos a into cos b. This we need to prove. So what I am doing, I am taking the right hand side. जो side थोड़ी बड़ी है, I am taking the right hand side. Right hand side को pick करते हैं. We will prove this as left hand side. तो cos square a minus b को I am writing same to same, plus cos square b is as it is, minus 2 को छोड़ के हमने पहले cos a minus b लिखा. Cos a minus b is here. Now 2 into cos a into cos b. 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? What is the formula of 2 cos a cos b? Formula is cos a plus b plus cos a minus b. Cos a plus b plus cos a minus b. So I am applying this formula of 2 cos a cos b here. So I am writing it here. So this is, I am putting a bracket because I am using 2 cos a cos b. 2 cos a cos b. Cos a plus b plus cos, तो cos a plus b plus cos a minus b. This will give me cos square a minus b plus cos square b minus. Now cos a minus b into cos a plus b minus cos a minus b into this, तो minus cos square a minus b. That means I have multiplied this cos a minus b with this and with this. Cos square a minus b से cos square a minus b cancel हो गया, एक प्लस का एक माइनस का. We are left with cos square b. Now the identity. Type 1, type 2, type 4. Type 4 की एक identity थी that cos a plus b into cos a minus b जो होता था उसका फॉर्मूला होता था cos square a minus sin square b. Cos square a minus sin square b is given by cos a plus b into cos a minus b. I am using this identity here. तो cos a plus b into cos a minus, यहाँ लगाया ब्रैकेट, यहाँ लगा दिया ब्रैकेट इस तरीके से, because we are having the term this. Cos a plus b into cos a minus b is cos square a minus sin square b. Identity, सिर्फ identities का खेल है in all the questions. यहाँ पर एक बार ये identity लगी है 2 cos a cos b, then this identity. तो cos square a minus sin, तो ये हो गया cos square a minus sin square b. Cos a plus b into cos a minus b is cos square a minus sin square b. That means cos square a minus sin square b is cos a plus b into cos a minus b. Cos square a minus sin square b. So I will write that cos square b minus cos a minus b into cos a plus b ये आ गया plus cos square, ये कट गया, ये कैंसिल हो गया, तो we are left with cos square b minus this. यहाँ पर ये आया तो इसका फॉर्मूला बन गया माइनस, ये बन गया cos square b minus cos square a plus sin square b. Now cos square b plus sin square b. Cos square b plus sin square b is 1 minus cos square a. Cos square b along with sin square b, so cos square b plus sin square b will be 1. 1 minus cos square a will be sin square a, which is the left hand side. So this was the question जो हमें करना था. It was a good question. Now suppose we are doing one question
अगर एक क्वेश्चन करना है फटाफट करते हैं। एक क्वेश्चन और है, अच्छा क्वेश्चन, वो ये है कि वी नीड टू प्रूव दैट cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y होल स्क्वायर शुड बी गिवन बाय 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाय 2। दिस वी नीड टू प्रूव, दिस वी नीड टू प्रूव। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पर बहुत आसानी से बच्चे कर देते हैं कि या तो दोनों का होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, उससे बन जाएगा। जैसे ये क्या बनेगा, दिस विल बी cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y प्लस 2 cos x cos y प्लस दिस विल बी sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y माइनस 2 sin x sin y। तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x विल बी 1, देन cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर वाई विल ऑल्सो बी 1, प्लस क्या रह गया 2 कॉमन, अंदर क्या बच गया cos x cos y माइनस साइन x साइन y माइनस साइन x साइन y। दिस वी आर लेफ्ट विद। नाउ 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 2, दिस इज cos a cos b माइनस साइन a साइन b विच इज cos a प्लस b। बहुत बार यूज कर लिया ये फॉर्मूला, cos a cos b minus sin a sin b is cos a plus b. So this is 2 कॉमन निकालने पर अंदर बन गया 1 plus cos x plus y। अब बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने कई बार यूज किया, कल भी यूज किया था एक फॉर्मूला, that 1 plus cos theta is given by 2 cos square half angle। 1 plus cos theta is given by 2 cos square half angle। So I am using it here, 2 तो बाहर है ही, 1 plus cos theta will be 2 cos square half angle, तो x plus y by 2, 2 into 2 is 4, तो 4 cos square x plus y by 2, which is the right hand side, which we need to prove. So today also we did few questions of trigonometry of proving type. Now rest of the questions we will discuss in next class, next video. Okay, thank you.